Assalamu alaikum students, welcome to the ICRA Civil Services Corner, 8 August 2025. We are going to start opinion analysis published in the Express Tribune newspaper. And today's topic is related to gender study paper. And this opinion is very useful for the argument that you have to put in the particularly in the gender study paper. All right. So yesterday we also have covered the topic related to women empowerment, how women are suffering in Pakistan, as well as today's topic is also relevant about and particular points are how women are marginalized, how much there is a domestic violence in Pakistan, honor killing cases in Pakistan, as well as there are some comparison this writer has done with the other countries, for example, Bangladesh and India. And I also have added some very important references where you can note down the important facts and figures. So students, you can note down these important points in your fact book if you are preparing and if you are following me along throughout the session or throughout the journey that I have started since 3 months ago. And I am giving the opinion analysis of the Express Tribune newspaper. And if you are following me along, you can note down the very important points related to the all key events that is all around in our country, and the current affair paper will be done from this. And definitely in the end of this year, I will conduct a current affair session in which I will teach you the very important current affairs topics, as well as the all the syllabus that you have to cover in the current affair particular subject of CSS papers. So I will conduct this session here on YouTube. So let's start the opinion without any further delay. Is Pakistan really the worst place to be a woman? क्या पाकिस्तान एक वर्स्ट प्लेस है? तो इसके लिए वो हमारे पास डिफरेंट स्टार्ट्स को जो है वो बताता है. सिर्फ महज बातें से आपने ये चीजों को कवर नहीं करना है. डेफिनेटली इन योर पेपर you have to note down, you have to pen down important points that will justify your statement. All right. So Pakistan has been ranked in the lowest in the World Economic Forum and the Gender Equality Index, और gender जो parity index है, equality index है, ठीक है, gender gap index है, उसमें we have ranked 148 out of 148. And now you people think like uh, why the other countries are not mentioned here. There are some constraints. There are some data lags or data gaps. So the numerous countries, for example, Afghanistan is not in that list. And definitely, if that country be in this list, so definitely वो हमसे lower rank पे ही होगा. So the comparison is done in this opinion. The crux of this opinion is attached. You can note down the important points from here. And yes, we are going to study basically read this opinion. Some students are saying me like they can read more better as compared to me. Yes, people, you can read more better, even very good as compared to me. I can also sometimes assume maybe some very senior bureaucrat is listening my lecture, or he or she can say that what this girl is doing. For example, I can do much better as compared to you. Yeah, you can. There is no comparison. All right. So let's start the opinion. Pakistan has reached rock bottom on the global gender gap index. This year, index ranked 148 countries using a combination of economic, educational, health, and political empowerment indicators. All right, students, एक चीज हमें important यहाँ से पता चली कि कितने कौन से indicators यहाँ पे use किए जाते हैं global gender gap index को identify करने के लिए. There are particularly 4 indicators. First one is economic, educational, health, and political empowerment. So definitely आपको इनके छोटे-छोटे stats पता होने चाहिए. And it found Pakistan's overall score to be worst. Since its launching at the World Economic Forum in 2006, तो हमें यहाँ से अंदाजा हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये 2006 से जेंडर गैप इंडेक्स को स्टार्ट किया. Has become the longest standing measure to track the progress of a large proportion of countries in closing gender gaps over time. Unfortunately, the situation in Pakistan has become worse with regard to gender disparity के लिहाज से Pakistan is on the top bottom list. And after being ranked 142 in 2023, तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे? You will draw a comparison in the form of graph. 2022 में कितना था, 3 में कितना था, 4 में कितना था, and 5 में कितना.
तो एग्जामिनर विल गेट एन आइडिया कि आपको पीछे का प्रॉपर एक ट्रैक का भी आइडिया है। सिंपली एक नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स आपको वैसे ही याद रह जाते हैं। Pakistan's position declined last year and again this year. So in 2025, now this is a very important comparison when you will draw a comparison of the South Asian countries. You can also draw a comparison with other the West countries, for example, Europe as well as US and other countries. But जब आप साउथ एशियन कंट्रीज की एग्जाम्पल का उसमें कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी टक्कर के मुल्क हैं, तो आपने इनके साथ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जामिनर को भी एक आइडिया होता है कि आप अपना कंपैरिजन उनके साथ करें ना जिनके साथ आपकी आपकी डायनामिक्स भी मैच होती है। तो बांग्लादेश के साथ होती है, इंडिया के साथ भी होती है, तो हमने उनका कंपैरिजन इसमें इन्होंने मेंशन किया है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। In 2025, Bangladesh did the best in terms of striving to achieve gender parity within the South Asian region. It was ranked 24th on the index, and despite ongoing political turmoil, जैसे कि हमने ouster of Sheikh हसीना वाजिद का जो हमने देखा है, and all that, ठीक है। इंडिया की वो बात करता है कि इंडिया परफॉर्म मच फॉर मोर डिसमली, यानी कि सैडली, ठीक है, डिस्पाइट इट्स ग्रोइंग एफ्लुएंस एंड इट वॉज रैंक 131st। एफ्लुएंस यानी कि अपना पॉप एंड शो जो हमेशा वो एक इस चीज को प्रेजेंट करता है, उसके बावजूद 131st पे है, ठीक है। तो पाकिस्तान में नॉट टेक्निकली बी द वर्स्ट प्लेस टू बी अ वुमन इन द वर्ल्ड। वो अब यहाँ पे इस चीज को आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि देर आर सम अदर कंट्रीज एज वेल इन दिस वर्ल्ड हु आर रियली लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी और पैरिटी और गैप इंडेक्स, बट पाकिस्तान लिस्ट में इसलिए है बिकॉज द डाटा इज अवेलेबल टू HRCP, Human Rights Commission of Pakistan, as well as other UNFPA, ठीक है, UNDP, because we have signed some memorandums and other जो हमने चीजें साइन की हुई होती है तो हमारा डेटा प्रॉपर शिफ्ट हो रहा होता है, प्रॉपर एनालाइज हो रहा होता है। ऑलराइट, so for example, Afghanistan is not in the list on the is not list on the gender gap index, and it would have certainly been ranked below Pakistan, but that is hardly a cause of complacency. All right. Next important जो आपके पास stats हैं that are here. In the case of Pakistan, however, while there is a modest rise in female literacy over time, कुछ बेहतरी आई है, and yes आई है, काफी ज्यादा वुमेन्स आर लिटरेट, बहुत सारे स्मॉल लेवल पे स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड नो डाउट इनमें मैन का जो मर्द हजरात उनका बहुत रोल है कि वो अपनी सिस्टर्स को, अपनी बेटियों को और इसके अलावा अपनी वाइफ्स को, दे आर अलाउइंग देम टू work from home and as well as so many other start their another endeavors. Over time, less than 30% of female and age 15 are above are illiterate, यानी कि वो ये थ्रेशोल्ड, ये ब्रैकेट बता रहा है कि ये जो इस एज में जो खवातीन हैं, दे आर लिटरेट। So Pakistan's performance in addressing gender gaps in healthcare remains pathetic too. अब pathetic healthcare में कैसे हैं? अभी हमने देख लिया ना, लिटरेसी में देख लिया, अब हेल्थकेयर में ये है कि while men face major difficulties availing quality healthcare, उनको काफी ज्यादा ठीक है, वुमेन अनमेट हेल्थ केयर नीड्स आर कंपाउंडेड बाय देयर लोअर स्टेटस इन सोसाइटी। अब जितने आपके पास कम पैसे होंगे उतने आपके पास लोएस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी, और डेफिनेटली जब आप लिटरेट नहीं होंगे तो आपके पास उसी के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर नीड्स जो पूरा करने के लिए उसकी भी आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है। देयर विल बी नो फैमिली प्लानिंग, देयर विल बी नो शाइनेस, और देयर वुड बी यू नो आस्किंग द क्वेश्चन और गोइंग फॉर द चेकअप्स एंड ऑल दैट, ठीक है। The women in Pakistan are also subjected to alarming amounts of violence. Now we are talking about the domestic violence that is ongoing with the women of Pakistan, which undermines their psychological health and sense of personal safety. कितनी फीमेल जो है वो घर में रह के ही पर्सनली जो है सेफ नहीं फील करती हैं, हियर इज द डाटा, एंड आल्सो इन द अपकमिंग स्लाइड्स आई हैव शेयर्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट ऑफ UNFPA. ऑलराइट, so almost 90% of women have reported experiencing domestic violence in their lifetime. 90% women of Pakistan ने domestic violence face किया है लाइफ टाइम, once in a lifetime तो फेस किया ही है, as per 2020 estimates। तो आप देख लेंगे 5 साल की डाटा में कितना फर्क आ गया होगा। Despite highlighting Pakistan's national record concerning these important issues, the gender gap index unfortunately pays no heed to the invisible labor performed by Pakistan by women, including for childcare and care for the elderly. ठीक है, तो आगे हम बात अब करने लगे हैं कि किस तरीके से वुमेन पार्टिसिपेशन क्या है वर्क फोर्स में, और उनको कितना उनकी जो सैलरीज हैं, जो उनकी रीमनरेशन है, उनमें किस तरीके से वो एक डिस्पैरिटी को फेस करती हैं। So the gender gap index also does not took note of the hard work women put into the production of agriculture food, because they are the backbone, because वो साथ काम करती हैं,
ठीक है, in the agriculture fields and which provide vital raw material for global supply chains. Only 23%, और मैंने इसके ऊपर एक ओपिनियन कवर किया है कि किस तरीके से there is no recognition जो एग्रीकल्चर में entrepreneurs women है, ठीक है. Only 23% or so of the workforce in the formal economy within Pakistan is comprised of women. Only 23% of formal economy, not informal economy. ऑल राइट. फॉर्मल जो कि डॉक्यूमेंटेड होती है, इनफॉर्मल जो अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, ठीक है. But even in the formal sector, women earn 10 to 30% less in terms of salary, in terms of remuneration. All right, जो आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है. If women participated in the labor force at the same rates as men, were remunerated equally, salaried, ठीक है, पैसे जो मिलते हैं. पाकिस्तान GDP could surge significantly, तो ये बढ़ेगा definitely. So this is all about the important stars जो कि हमने कवर करने थे, वो हमने रीड कर लिए हैं. Now the slide question is here. You can note down the important points. You can note down these important headings. How these opinion are important for your preparation. ये इस तरीके से important है कि आपके पास जो भी मार्केट में बुक्स होती हैं उसमें छपा छपाया डाटा, thousands of students are using that data. If you have to make a difference in your paper, you have to put down the different points. All right. So opinions with the references. यहाँ पे अब जितने भी references mention होते हैं तो वो UNDP की तरफ से, UNFPA की तरफ से है, HRCP की तरफ से है, तो आप उनको safely quote कर सकते हैं उन stats को अपने पेपर में. तो definitely it will make a difference in your paper. Pakistan's decline in gender gap index. तो पाकिस्तान का हमने रैंक देखा किस तरीके से. It is 148 out of 148 measured countries. Decline from 142 to 2023, और हर साल ये डिक्लाइन की तरफ से गिरता ही जा रहा है. 4 इंडिकेटर्स हम इसमें देखते हैं. इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हेल्थ, पॉलिटिकली, ये सारे इंडिकेटर्स. देयर आर 4 इंडिकेटर्स. इसके अलावा रीजनल और ग्लोबल कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश ने इंप्रूव किया और इंडिया कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा. 131 पे इंडिया है और बांग्लादेश 24 नंबर पे है. अफगानिस्तान इस लिस्ट में आता ही नहीं है बिकॉज ड्यू टू लो डेटा एज वेल एज हमें पता है कि किस तरीके से वहां पे दे आर वो रिजेक्ट कर रहे हैं वुमेन एजुकेशन को. Limitations of the index focus on the gap between the genders, not absolute well-being levels. ठीक है. इसके अलावा there are some इस ये जो हम इंडेक्स देख रहे हैं इसमें भी अभी complete data is not mentioned. In Pakistan's case, absolute levels are also very low. So the low rank reflects reality. All right. So education and literacy की अगर हमने बात की है कि family literacy 15 plus है, below 30%. इसके अलावा हमने ये HRCP की बात करी थी मैं कि जो हमने अभी एक हमने केस देखा था बलूचिस्तान में, शीतल के नाम से वो काफी ज्यादा वायरल था, बट एक्चुअल नेम वाज नॉट शीतल. Human Rights Commission of Pakistan recorded at least 405 honor killing across the country in 2024. ये वो है जो reported है. इसके अलावा there are thousands of cases that are not reported in Pakistan. उनका कोई अता पता कोई नाम नहीं है उनका, लेकिन 405 are reported in the 1 year, that is 2024. All right. So health केयर गैप्स हैं हमारे पास. लोअर सोशल स्टेटस हैं. जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में द मोर मनी यू हैव द मोर गुड लाइफस्टाइल यू हैव, तो आपके पास यू विल बी अनएबल टू गेट द गुड हेल्थ फॉर योर फीमेल. ठीक है. यहाँ पे मर्द हजरात भी फिर काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं बिकॉज द मोर बिगर पॉकेट दे हैव, तो फिर उसी लिहाज से वो अपनी फीमेल पे इन्वेस्ट भी करते हैं या फिर उनकी जो एक हेल्थ केयर होती है उसके ऊपर खर्च करते हैं. ठीक है. अर्ली मैरिजेस हैं. Stats are here. You can note down the important points, important stats from here. All right. Early marriages and poor reproductive health care. ठीक है. यहाँ पे completely health care, family planning की बात कर रहे हैं. Violence against women. 90% of women report lifetime domestic violence in 2020 के estimates के according. And here UNFPA की तरफ से data is here. यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कितनी परसेंट जो गर्ल्स हैं जिनकी 18 इयर्स जो है उससे पहले ही शादी हो जाती है. ठीक है. In Pakistan, 28% of women aged 15 to 49 have experienced physical violence. ये हमने अभी देखा. UNFPA की तरफ से the stat is here. वो मैंने ऊपर यहाँ पे लिंक मेंशन इसलिए किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि it is a authentic data. 6% have experienced sexual violence. 6%. All right. And 34% of ever married women have experienced spousal, physical, sexual, and emotional violence. 5% of women have experienced spousal sexual violence. Pakistan Demographic and Health Survey ये इसका है, तो ये काफी पुराना है, ये आपको कोट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. 56% who have been experienced any type of sexual or physical violence have not sought help or talked with anyone about the violence. ठीक है. फीमेल्स जो है वो बात नहीं करती. यहाँ पे आ जाएं.
ये जो है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे PDHS 18% गर्ल्स जो एज है 2024 वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, ठीक है, एंड 3.6% वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 15. So these are the alarming rates. Invisible and underpaid labor, तो यहाँ पे हमने अब बात की कि किस तरीके से women are marginalized in terms of salary, ठीक है. तो only 23% workforce is female even in formal sector. Formal sector में 23% है और उनको जो सैलरी है वो 10 से 30% लेस मिलती है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है. क्योंकि यही है कि मर्द घर चलाते हैं तो मर्द को ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, फीमेल है तो वो मोर आवर्स को भी इन्वेस्ट करके या लगा के भी उनको उस हिसाब से उतने पैसे नहीं मिलते हैं. Political marginalization भी है, ministerial representation, there is a zero ministerial representation, women's in parliamentary representation भी नहीं है, and without political inclusion, resource allocation to women health, education empowerment remains limited. Definitely जब किसी एक gender department में एक female ही नहीं होगी या आप उनको represent ही नहीं करेंगे तो किस तरीके से आप women की education health empowerment पे ज्यादा उसको आप उसके लिए ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे. For the essay paper, you can use these all import starts for the gender study paper as well as current affair paper, women empowerment. ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट बेस्ड टॉपिक. पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरीके से CSS के पेपर में, PMS के पेपर में, इसके अलावा SAS के पेपर में कहीं ना कहीं वो लाजमी इसको पूछ लेता है, ठीक है. तो यू कैन यूज इन numerous ways. So that's all for today. You can like the video, you can subscribe the channel and share it to other students as well. Allah Hafiz.